Om Gnanantimanandasya Yananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamaya Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadakammalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarajatam Sahagana Raghunatam Vikantam Sajiva Savaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitascha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Manchakalpatarubhyascha Kripala Sindhurya Devacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaya Narottamam Naram Chaya Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 2, Daksha curses Lord Shiva, verses 17 and 18. श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक 17-18 दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप. And we can chant verse 18 together. Here. I am to Deva Yajana. 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 Indro Pendradivir Bhava. Indro Pendradivir Bhava. Indro Pendradivir Bhava. Indro Pendradivir Bhava. Sahabhagam Nalavatam. Sahabhagam Nalavatam. Sahabhagam Nalavatam. Sahabhagam Nalavatam. Devair Deva Ganadama. Devair Deva Ganadama. I am to Deva Yajana. Indro Pendradivir Bhava. Sahabhagam Nalavatam. Devair Deva Ganadama.
यजना अयं तु देव यजना इन्द्रोपेन्द्रादिर्भवः सहभागं न लभताम् देवैर्देवगणाधमा अयं तु देव यजना अयं तु देव यजना सहभागं न लभताम् अयं तु देव यजना अयं तु देव यजना इन्द्रोपेन्द्रादिर्विभवः सहभागं न लभताम् देवैर्देवगणाधमः Let's just read the translation to verse 17, and then we can go through this verse. तो 70वें श्लोक जो इससे पहले वाला श्लोक है उसका अनुवाद। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। Okay, yes, you can go through word for word translation purport. शब्दार्थ 18. अयम यह तो लेकिन देवयजने देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदि भी इंद्र उपेंद्र तथा अन्यों सहित भवः शिव सह के साथ भागम एक अंश नहीं लभताम प्राप्त करना चाहिए देवताओं से देवगणाधमः समस्त देवताओं में सबसे हमारे देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य, इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से शिव जी अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठे। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भौतिकतावादी थे खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जप करते थे, क्योंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते थे, क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे क्यों विष्णु पार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। निष्कर्ष यह निकला कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधक न बने। Hare Krishna. Mukam kardi vachalam angum mangayate yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Ayam tu devayajana Indro Bendrani Virvava Sahabhagam na lavatam Devayar Devaganadam. The demigods are eligible to share in the oblations of sacrifice, but Lord Shiva
who is the lowest of all the demigods, should not have a share. देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। Daksha is very upset. तो दक्ष बहुत निराश है। So let us imagine this situation. तो आइए इस परिस्थिति की कल्पना करते हैं। What is the family relationship between Daksha and Shiva? तो दक्ष और शिव के बीच में क्या पारिवारिक संबंध है? ससुर और दामाद, ससुर दामाद। Son, he is the son-in-law. And Daksha is expecting him to behave as a son-in-law by showing some respect when the father-in-law enters the place of sacrifice. तो दक्ष जो हैं क्योंकि वे ससुर हैं, तो ऐसी आशा करते हैं कि उनके दामाद शिव जी उन्हें आदर देंगे जिस प्रकार से दामाद को उन्हें देना चाहिए। So already here we have a lesson we can learn. तो यहाँ हमारे पास सीखने के लिए एक शिक्षा है that we always have expectations. कि हमेशा जो हमारे कुछ ना कुछ एक आशा होती है। Asha means hope, expectation. आकांक्षा। आकांक्षा। What is the word? आकांक्षा। Akanksha. आकांक्षा। Akanksha. Oh, okay. Akanksha. Yeah. So, and our akanksha, our expectations, can get us into trouble. तो हमारी आकांक्षाएं हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। Because we are expecting, we think things should happen like this. क्योंकि हम ये आकांक्षा रखते हैं कि जो कुछ भी होगा वो इसी प्रकार होगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। So when they don't happen the way we expect, then we become disturbed. तो फिर जब वो इस प्रकार नहीं होता है जैसे हमने चाहा था, तो हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। Disturbed. परेशान हो जाते हैं। You have this experience? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? Yeah. So what is the solution? तो इसका क्या समाधान है? Samadhan. क्या समाधान है? What's the solution? What do you suggest? What do you suggest? आप लोग कुछ सुझाव दीजिए। क्या समाधान है? Huh? Ladies, what's the solution? Try to minimize our expectations. Yeah. What the people around us from. Yes. Minimize expectation. तो हमारी आकांक्षाओं को निम्न कर दिया जाए। Expectation comes with a sense of entitlement. तो जो आकांक्षाएं आती हैं वो जब हम अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हैं, बात ही देते हैं अपने आप को, तो उससे आती है। Maybe adhikar. Adhikar. We think we have some adhikar. हमें ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है। Yes. So, and this sense of adhikar, we think I have a right to receive something, to receive respect or whatever. तो हमें लगता है कि हमारा अधिकार है कि हमें जो है आदर मिलना चाहिए। So this was Daksha's problem. तो यही दक्ष की भी समस्या थी। Now, let's think about Lord Shiva in this situation. Shiva.
what is he doing? He is sitting, and what is he doing? तो हम शिव जी के बारे में विचार करते हैं कि भगवान शिव जो इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। वे बैठे हैं और king, what's he doing? और वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हरि हरि Huh? Yeah, he was chanting. chanting ध्यान Is he chanting japa? जब कर रहे हैं क्या? Is that what it ध्यान says? में Oh, okay. I thought he was simply meditating. Meditation, japa, both same. So he was very absorbed in his meditation, his japa. तो वे अपने जब में अपने ध्यान में बहुत मग्न थे। So being so absorbed, it could be that he didn't even notice when Daksha came. तो इस प्रकार वो ध्यान में थे, तो शायद उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया होगा कि दक्ष आ गए हैं वहाँ पर। We can imagine in a present day situation. तो हम इसे कल्पना कर सकते हैं आज की परिस्थितियों से तुलना करके। So you just had a visit here in India, including in Delhi, of the U.S. president. तो अगर जैसे यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, वो सोचिए कि भारत आते हैं। He's a very proud person. तो वो बहुत ही गर्वित हैं। Yeah. So imagine Lord Shiva would be present there also, absorbed in meditation, completely ignoring when this man comes in. तो ऐसा सोचिए कि भगवान शिव वहाँ पर हैं जब ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर आते हैं। भगवान शिव ध्यान में हैं। as नरेंद्र मोदी Yes. Yeah, so imagine the response if this would happen. तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि उस समय क्या होगा इस प्रकार से परिस्थिति। Imagine the Prime Minister was absorbed in meditation. अगर ये प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो इस प्रकार से ध्यान में लगे हैं। ट्रम्प सारे This could be a big international scandal. तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाएगी। That's it. अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाएगा। Antarashtra Vivad ho. So, yeah. So now let's think about Daksha again. Because of his expectation, he has a certain perception. तो दक्ष हैं, अपनी आकांक्षाओं की वजह से उनका जो एक परसेप्शन है, यानी कि कुछ ना कुछ उनका एक नजरिया है। He sees things a certain way. तो जो है वो चीजों को एक तरीके से देखते हैं। And he's thinking, oh, Shiva is insulting me. वो ऐसा सोच रहे हैं कि शिव जो हैं मेरा निरादर कर रहे हैं। Now, from Shiva's point of view, he doesn't want to insult Daksha. तो अगर भगवान शिव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो उनका निरादर नहीं कर रहे। No, he's absorbed in his meditation. He's not thinking one way or another about Daksha. He's doing something else. परंतु वे तो ध्यान में लीन हैं, वो दक्ष के बारे में सोच ही नहीं रहे। So we have, you can say, two different universes. तो ऐसा कह सकते, लगा सकते हैं जैसे दो अलग ब्रह्मांड हैं। And now Daksha, with his expectations, he thinks there's only one way to react. तो दक्ष अपनी आकांक्षाओं के कारण ऐसा सोचता है कि प्रतिक्रिया करने का एक ही तरीका है। And what is his idea of how to react? To curse. और उसका क्या विचार है इससे संबंधित कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है? शाप देकर। Have you ever had the feeling you just feel so angry you want to curse someone?
तो क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आप बहुत गुस्सा हैं और आप शाप देना चाहते हैं? You ever felt like that? No. Devotees are they're very gentle. Huh? Maybe sometime you had that, some feeling like that, yeah? हो सकता है कभी जीवन में कभी ऐसी जो भावना हमारे में आई हो. In any case, sometimes we feel angry, right? Some anger is there. चाहे जो भी हो, हम गुस्सा तो हमें आता ही है. So here's my point, is when we experience something like this, we can stop and ask ourselves a question. कहने का तात्पर्य है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए और अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए. Do you want to know what is this question? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह प्रश्न क्या है? Yes. The question is, you ask yourself, is there another way to understand this situation? तो वह प्रश्न है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या कोई और भी तरीका है इस परिस्थिति को समझने का. And as soon as you ask yourself that question, and you're sure to discover that the answer is yes. और जब आप अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से आप यह पाएंगे कि इसका उत्तर है हाँ. There is another way, and that way is a better way. हाँ, एक और तरीका है और वो तरीका बेहतर है. And that better way is to see that everyone in the particular situation are servants of Krishna. तो वह तरीका है कि यह देखना कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है. Pratyek. And since everyone is a servant of Krishna, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, whether they know or not that they are servant of Krishna, चाहे वे ये जाने या ना जाने कि वे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, therefore everything is under Krishna's control. इसीलिए हर चीज जो है भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है. Har cheese. And this can bring you a feeling of great relief. और इससे जो है आप बहुत Relief. Aram. आराम, तो इससे जो है बहुत आराम का अनुभव करेंगे. Yeah. Because you realize again, or you remember, I am not the controller. मैं ईश्वर नहीं हूँ. तो आप ये अनुभव करेंगे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं नियंत्रक नहीं हूँ. यंत्रक. नियंता. मैं नियंता नहीं हूँ. Okay. I had a little training in Hindi many years ago. महाराज कह रहे हैं कि महाराज ने हिंदी में कई साल पहले प्रशिक्षण लिया हुआ है. लेकिन सब भूल गए. Okay, so now we're in the fourth canto, and we remember, we know of a similar situation in the first canto. हम चतुर्थ स्कंद में हैं और हमें याद है कि प्रथम स्कंद में भी इसी तरह की परिस्थिति आती है. Right? So what happened in the end of Canto 1 similar to what's happening here? प्रथम स्कंद के अंत में ऐसा क्या हुआ था जो इसी से मेल खाता है? What happens? क्या हुआ था ऐसा प्रथम स्कंद के अंत?
what happens at the end of Canto 1? प्रथम स्कंद के अंत में क्या होता है? You read that many years ago. You don't remember. Yes. Shukdev Goswami enters into the family of Before that. You're close, but Videos are similar incident. Vidur when it entered the house. Vidur, that's third canto. Krishna Maharaj gets aqueous snake in the neck of him. Okay. Yes. Parikshit Maharaj became angry. Yes. Why did he become angry? परीक्षित महाराज जब गुस्सा हो जाते हैं, वे क्यों गुस्सा होते हैं? He was He respecting was that. expecting water or something from the From that Brahman sage, right? Very good. Okay. So again, we had a sage. In this case, what was his name? Anyone remember? Shamika Rishi. So, and what was he doing? तो प्रथम स्कंद में जो हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज गुस्सा हो जाते हैं शमिक ऋषि के ऊपर, क्योंकि वो उनसे चाह रहे होते हैं कि वो उन्हें पानी दे। तो उस समय जब वो गुस्सा होते हैं, शमिक ऋषि क्या कर रहे होते हैं? ध्यान कर रहे हैं। So, same thing. Lord Shiva absorbed in meditation, Shamika Rishi absorbed in meditation. तो वही परिस्थिति है कि भगवान शिव जो है ध्यान में है, शमिक ऋषि भी ध्यान में थे। Daksha comes to Lord Shiva, Parikshit Maharaj comes to Shamika Rishi. दक्ष भगवान शिव के पास आते हैं और शमिक ऋषि के पास जो है वो परीक्षित महाराज आते हैं। Daksha Maharaj is ignored, Parikshit Maharaj is ignored. दक्ष महाराज को जो है उन्हें इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया, दक्ष को भी और शमिक ऋषि को भी। Yeah, same thing. In both cases, there's some expectation which is not realized. तो दोनों ही परिस्थितियों में कुछ ना कुछ आकांक्षाएं थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया। And both cases result in a curse. और दोनों ही परिस्थितियों में जो परिणाम था वह था शाप। Now, let's go back to Daksha. Let's imagine that Daksha doesn't get so angry so quickly. Maybe he's disturbed, but he's also keeping some intelligence. Let's imagine. तो चलिए अब दक्ष के प्रसंग में चलते हैं। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि दक्ष जो है इस परिस्थिति में एकदम से गुस्सा नहीं होते हैं और कुछ ना कुछ जो है विवेक से काम लेते हैं। So, what could be an alternative reaction by Daksha? जो इसका क्या वो एक प्रतिक्रिया हो सकती है दक्ष की, इससे अलावा अगर हम सोचते हैं तो ऐसी क्या प्रतिक्रिया हो सकती We है? have to use our imagination a little bit here. हमें कल्पना करना है, हमें इसके बारे में सोचना है। Kalpana. Some other way that he might have reacted to Lord Shiva. तो क्या ऐसा कोई और तरीका हो सकता है कि दक्ष ने किसी और प्रकार से प्रतिक्रिया की हो भगवान शिव के प्रति? Can we think of some way? Anyone? Do you understand my question? आपको प्रश्न समझ में आया? Yes, Maharaj, it could be happened that Daksha could go to the Lord Shiva and ask, is there any problem between us? Yes, that's a nice possibility. तो माता जी कह रहे हैं कि दक्ष ऐसी परिस्थिति में शिव जी के पास जा सकते थे, उनसे पूछ सकते थे कि आपको मुझसे कोई समस्या है? Are you feeling okay or healthy? Yes, are you okay?
maybe Shivji, he might be absorbed in meditation. Better I don't disturb him. तो यह भी सोच सकते थे कि शिव जी लगता है कि ध्यान में लीन है, अच्छा हुआ कि मैं उन्हें ना छेड़ूं। There are many possibilities of how he might have reacted. He is my son-in-law. I should give respect. He's my son-in-law. He is like my son, so let me appreciate him. Yeah. मेरे दामाद हैं, मेरे पुत्र जैसे हैं। Maybe I don't deserve. Yeah, maybe I don't deserve. Yeah. ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है मुझे जो है आदर में नहीं डिजर्व करता है। Yes. दक्ष महाराज ना एक भगवद गीता में श्लोक आता है, पूरी भगवान ने गीता तो बहुत पहले बोली थी, तो उस श्लोक का याद कर सकते हैं। क्रोध आद भक्ति समग्र, क्रोध में भक्ति सब कुछ भूल जाता है जब उन्हें पढ़ी होती। Prabhuji is saying that since Krishna gave Bhagavad Gita long ago, so he must have remembered that shloka, Daksha, Krodadavati Sammoha. Daksha remembered what Krishna spoke. Must have. Okay, yes, because he spoke to the sun god. Okay, yes. Yes, he could have remembered. Kama esha krodha esha rajaguna samudbhava mahashama mahapatma vidyena iha vairinam. Yes, this anger, this is simply an enemy I should avoid. क्रोध जो है वो हमारे दुश्मन है, उसे But no, Daksha seems to not remember, and so what does he do? He makes this curse. तो दक्ष जो है ऐसी किसी चीज को याद नहीं रखते हैं और अंततः शाप दे देते हैं। Srila Prabhupada explains in his purport that Vishwanath Chakravarti Thakur explains that actually the curse is a blessing. श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि यह शाप नहीं अपितु वरदान है। And in a similar way, the curse that was spoken by the son of Shanika Rishi, cursing Maharaj Parikshit, he accepted as a blessing. तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब शमी ऋषि के पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया तो उन्होंने भी इसे एक वरदान की तरह लिया। And so this we can also learn from. We can also learn something from this. तो इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। It may be that someone is not wishing us well. ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे शुभचिंतक नहीं हो, शुभकामना ना करता हो। And we can reflect on this. Could it be that behind this negative feeling there is some blessing? तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस विपरीत जो उनकी भाव है उसके पीछे कोई ना कोई आशीर्वाद छिपा है। So this again we can think as a question to ask ourselves. तो यह एक प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। And the question, what would be the question now that we want to ask ourselves? तो वह क्या प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछना चाहिए? Any idea? What do we want to ask ourselves here? तो इस परिस्थिति में अपने आप से क्या पूछें? If we are in such situation. Yes, if we're in such situation. Maybe someone is not cursing us, but maybe we feel they have some negative feeling about us or whatever. Or we feel some misfortune happens to us. तो कोई किसी व्यक्ति की हमारे प्रति बुरी भावना है या कुछ हमारे साथ गलत होता है तो उसके पीछे क्या अच्छा छुपा है, हमें इस परिस्थिति में हमें कैसे अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत होता है या कोई व्यक्ति हमारे प्रति बुरी भावना रखता है तो हम क्या प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं? Tatena kampansu sunikshamano kunjana evatmakitam vivakam ridvakapurvir vidadam namaste jiveta yo mukti bade samayavak. Yes,
very nice verse. How does it translate? The one who Or in Hindi? yes, हिंदी में वो व्यक्ति जो अपने ऊपर आए हुए कष्टों को अपने पाप कर्मों का परिणाम के रूप में देखता है और उसको और एट द सेम और उसी सेम टाइम पर वो ये सोचता है और ये उम्मीद किए करता है कि भगवान मुझ पर कभी ना कभी कृपा करेंगे। Okay. तो ऐसे व्यक्ति का मुक्ति पर अधिकार मिलता है। Yes. So this, of course, is a kind of, it's describing a certain attitude. this verse Attitude, particular mentality, way of thinking. मानसिकता प्रदर्शन तो ये जो शाप this curse श्लोक represents This verse. तो ये जो श्लोक प्रभु जी ने उदित किया, प्रभु जी ने बताया, ये एक तरह की मानसिकता को जो है व्यक्त करता है। So now can we turn this attitude into a question to ask ourselves? तो क्या इस मानसिकता को इस विचार को हम एक प्रश्न में बदल सकते हैं जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं? Can we just ask ourselves, is there a blessing hidden behind my misfortune? तो क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे इस दुर्भाग्य के पीछे कोई ना कोई आशीर्वाद छुपा है? So, and by asking ourselves that question, we open ourselves to the possibility of receiving that blessing. तो इस प्रश्न को हम जब अपने आप से पूछते हैं तो हम बहुत से अवसरों के द्वार, इस प्रकार के अवसर के द्वार, बहुत अवसरों के द्वार अपने लिए खोल देते हैं। If we don't do that, then we start to chant a mantra to ourselves, which does not help. तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम एक मंत्र अपने आप से दोहराते हैं जो कि है, What is that mantra? तो वो क्या मंत्र है? I am so unfortunate. I am so unfortunate. I am so unfortunate. तो मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ। And what happens when we chant that mantra? क्या होता है जब हम इस मंत्र का जप करते हैं? We become very unfortunate. हम दुर्भाग्यशाली बन ही जाते हैं। We secure our misfortune. तो हम अपने दुर्भाग्य को संरक्षित कर लेते हैं। Now, in this verse, we have the word bhagam. तो यहाँ पे जो है शब्द है भागम। Bhagam. Saha bhagam na lavatam. सह भागम न लभताम। So the shop, the actual curse here, is bhagam na lavatam. Let him not receive his share, his portion. तो यहाँ पे जो शाप है वह न भागम न लभताम, भगवान शिव को जो है अपना भाग प्राप्त नहीं होगा। And this word bhagam, share, is related to the word bhakti. और यह शब्द भाग जो है वह भक्ति से संबंधित है। Both of them in Sanskrit have what's called a dhatu, a verbal root. तो संस्कृत में जो दोनों शब्दों की धातु है वह है, And this dhatu is bhaj. तो वह भज धातु है। Bhaj means to share. It's a verb, to share. भज का मतलब है कि भाग करना, शेयर करना, Share karna. शेयर करना, शेयर। In English language, in the business world, there is the stock market. You know the stock market. तो जो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता है। And in the stock market, people are buying and selling shares. तो स्टॉक मार्केट में जो है वो
लोग जो हैं शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं. So they're buying and selling bhaga. तो वो भाग को खरीद और बेच कर रहे हैं. Now, the general term for Ishvara, another general term in Sanskrit, is Bhagavan. तो ईश्वर के लिए जो एक और शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है वह है भगवान. So what means Bhagavan? Literally, it means one who possesses shares. तो जो भगवान का अर्थ है वह है जो जिसके पास कि वो भागों को अपने पास रखता है. So Bhagavan means the one who possesses all shares. भगवान मतलब जो सभी भागों पे उनके पास सभी भाग हैं. Aishvaryasya samakrasya viryasya yashasashriya jnana vairagyayoschaiva shannam bhaga iti ingana. 6 types of bhaga are described. महाराज जी ने जो श्लोक पर उसमें 6 भागों का वर्णन किया गया है. What are they? तो 6 भाग कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acidic acid, acidic gun, acidic acid. Okay, did we get them all? Yes. One of the qualities, one of these bhagas, opulence, is tyaga, is renunciation. और इन भागों में से एक भाग है त्याग. Vairagya, actually, detachment. And Lord Shiva is showing, he is demonstrating that particular bhaga. और यहाँ जो भगवान शिव हैं वो इस एक भाग को प्रदर्शित कर रहे हैं. So when Daksha says bhagam na lavatam, then Shiva is saying, yeah, so what? जब दक्ष कह रहे हैं भागम न लभताम, तो भगवान शिव कह रहे हैं तो क्या? He is not interested in the bhaga. तो उन्हें कोई रुचि नहीं है इस भाग में. Because he has a better bhaga. He has this opulence of detachment. क्योंकि उनके पास जो है उससे श्रेष्ठ भाग है. उनके पास जो है वैराग्य का ऐश्वर्य है. Shresht bhaga. So he is actually. So then we may ask, so why did he even come to this yajna? तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर वे यज्ञ में आखिर आए ही क्यों? If he's not coming to get some share from the sacrifice. Swaha, swaha. यज्ञ में अगर यज्ञ का कोई हिस्सा लेना ही नहीं था तो फिर वे वहाँ पर क्यों आए? Why even come? You come to the Sunday feast, but you're not hungry. Why you even come? यदि आपको भूख ही नहीं लगी है तो फिर संडे फीस्ट में आप क्यों आएंगे? You come and devotee offer you a plate and you say, no, thank you, I'm full. Why you even came? यदि आपको प्रसादम की प्लेट दी जाए आप कहें नहीं मेरा तो पेट भरा है, तो यही कहेंगे कि वही फिर आए क्यों? So why did Lord Shiva come? भगवान शिव क्यों आए? Any idea? Yes. जितने भी देवता थे सारे वो इकट्ठे हो रहे थे तो भगवान की भक्ति उन सब का दर्शन करने के लिए. To give his darshan. To have other darshan. To have other darshan. Oh, to have darshan. That other devotees, like demigods are also devotees. Yeah. So that was Sangha, so you can. Yeah. So we can say Lord Shiva also came to give his blessing for them to have his darshan. हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान शिव वहाँ पर अपना आशीर्वाद देने आए बाकी सबको, ताकि वो बाकी सभी जो हैं उनका दर्शन कर सके. But Daksha had no appreciation of this. लेकिन दक्ष का इस बात से कोई उन्हें सरोकार नहीं था. Yeah. Prabhupada in his purport gives another example of such detachment. प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं इस
प्रकार के क्या था वैराग्य का? Namely, Srila Gaura-Kishora Babaji, how he would sit in a very unattractive place next to the toilet and he would chant Hare Krishna. कैसे श्री गौर-किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं वो टॉयलेट के पास बैठकर जो है शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्णा जप करते थे. So the next time you see someone chanting Hare Krishna next to the toilet, be careful about judging them. What are you doing here? Maybe they're following Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj. अगली बार आप अगर किसी को शौचालय के पास जप करते देखें तो सावधान रहिएगा कि हो सकता है वे गौर-किशोर दास बाबा जी को के अनुसार चल रहे हैं. A general lesson we can all take from this is to be very cautious about judging others. एक सामान्य शिक्षा जो हम यहाँ पर ले सकते हैं वह है कि दूसरों को जज नहीं करना. Okay, we have English translation. That's okay. I'm appreciating your sincere effort. That's okay. Okay, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki